education has to proceed, and that festival celebration has to proceed. So that's why we have to proceed with sensibility and safety of each and everyone. Yes, yes. Good evening, Yogita. Okay. Now let's move. Uh, in last lecture, we were discussing the topic chapter named nuclear chemistry and radioactivity. That is the topic. That is the chapter what we were discussing. Am I right? So hope so. Everyone amongst us or amongst you may be able to recall what we were discussing in last lecture. So we were discussing nuclear chemistry and radioactivity, which is very potential topic and very updated topic. This is the uh, chapter, this is the topic, this is the principle which has the capacity to create this world or destroy this world. So world is facing the scarcity of the energy, and everyone is finding for alternative source of energy. And nuclear chemistry or radiochemistry has the power to supply renewable source of energy to the world. We can overcome the scarcity by knowing the principles of this nuclear radiochemistry. This chapter has 3 sections, you know well. First section is related with the introduction of nuclear and radiochemistry. Middle part is related with the main principles of electrochemistry, nuclear chemistry and radioactivity. And the last part is related with the applications of this nuclear chemistry or radioactivity. Last 2 to 3 lectures has been done. And in this lecture, we have discussed, basically here in the chapter, we are concerned with the nucleus of an atom. We have seen the structure of atom in one of the chapter in physical chemistry, that is structure of atom itself is the name of chapter. Structure of atom itself is the name of chapter where we have seen the structure of an atom. Very well, no doubt. Okay. Then going ahead, we have seen that this structure of atom can be made analog with our solar system. We know the solar system where the sun is at the center, all other planets revolve around the sun. So that is what we have seen. Similar like that, when we discuss the structure of atom, atom has centrally situated a highly dense area known as nucleus, and electrons revolves around the nucleus in circular orbits or particular paths. Now the thing is that electrons, protons and neutrons are called as the fundamental particles of an atom. Out of this, protons and neutrons are present in the nucleus and electrons revolves around the nucleus. This chapter being concerned with only nucleus of an atom, rest part of the atom we are not concerned here in the chapter. We are going to discuss only nucleus of an atom. Nucleus, what are the principles related with the nucleus? What are the nuclear particles? How are the nuclear reactions, interactions are going on? तो इस चैप्टर के अंदर हम न्यूक्लियस के अंदर जाने वाले, न्यूक्लियस के बाहर नहीं आएंगे. न्यूक्लियस के बाहर क्या हो रहा है हमें कोई लेना देना नहीं है. तो इस चैप्टर न्यूक्लियस के साथ कंसर्न है. सो स्टार्टिंग में इस चैप्टर में देखा हमने, हम इस चैप्टर में जब न्यूक्लियस के अंदर चलते हैं, न्यूक्लियर केमिस्ट्री का न्यूक्लियस के अंदर चलते हैं, तो किसी भी एटम को हम न्यूक्लाइड कहते हैं. और न्यूक्लियर रिप्रेजेंट करने का तरीका हमने अच्छी तरह जाना है कि न्यूक्लियर किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है. एक्स जेड ए, every nuclide is represented as X, Z, and A. Z represent the atomic number, A represent the mass number, N represent the neutron number, and X represent the symbol of elements. That is what we have said. And these nuclides are classified depending on the different criteria. Number 1 criteria is that is isotopes. Number 2 is isobars. Number 3 is mirror nuclei. Number 4 is isotones, and number 5 is nuclear isomers. This is the classification of nuclides. Even classification of nuclides can be also done on the basis of stability of the nucleus. So we have 2 types of nucleus, stable nuclides and unstable nuclides. Stable nuclides are those which remains unchanged for keeping a long time, and unstable nuclides are nuclides which slowly converts into some other nuclides during some period of time, and that is nothing but the unstable nuclides. Also, we have seen the stability depends upon which factors. So this is also one of the important topics we have seen in this chapter. There are many factors which decide the stability of the nuclides. Number 1 factor is nothing but odd or even number of protons or neutrons. Number 2 is the proton to neutron ratio. Number 3 is nothing but the magic number. Number 4 is nothing but the nuclear potential. And number 5 is nothing but the nuclear binding energy. So in last lecture, we have seen in detail what is binding energy. We have seen that structure of atom, this is the nucleus, and electron revolves around the nucleus here in circular orbit. Okay, so these are the electrons, and this is nothing but the nucleus. And this nucleus has the presence of protons and neutrons. It has the protons, it has the neutron. And इसका जो diameter होता है 10⁻⁻15 मीटर, इतना diameter होता है. Diameter of the nucleus is 10⁻⁻15 मीटर, इतना diameter होता है. So now thing is that
protons are positively charged and electrons are neutral. Sorry, neutrons are neutral. Protons are positively charged, neutrons are neutral. Then how they are held together in an atom, in the nucleus of an atom? The thing is that हम अच्छी तरह जानते हैं, there is one of the important concept of electrostatic. It is a branch of physics. Electrostatic is a branch of physics where we have seen that like charges has the repulsion and opposite charges has the attraction. So opposite charges has the attraction. So positive has the attraction for negative, negative has the attraction for positive. Whereas positive has the repulsion, negative has the repulsion. So simply आप बचपन से ये जानते हो, स्कूल लाइफ से ये जानते हो, like charges has the repulsion and opposite charges has the attraction. But these concepts are not applicable to the nucleus because nucleus के अंदर हम अच्छी तरह जानते हैं कि there are the protons and all protons are positively charged. There must be repulsion between the protons and protons के बीच में अगर repulsion होगा, they must not stay into the nucleus. They should come out of the nucleus, or if they comes out of the nucleus, nucleus doesn't exist. और न्यूक्लियस एग्जिस्ट नहीं होता है, मतलब स्ट्रक्चर ऑफ एटम भी एग्जिस्ट नहीं होता है. सो इन दैट सेंस उस तरीके से अगर हम डिस्कस करते हैं, उस तरीके से हम देखते हैं. सो हियर डिफरेंट कॉन्सेप्ट और डिफरेंट इंटरेक्शंस आर एप्लीकेबल. सो दो प्रोटॉन इज पॉजिटिवली चार्ज, देयर आर थ्री टाइप ऑफ इंटरेक्शन. प्रोटॉन प्रोटॉन, देयर मे बी अट्रैक्शन, देयर मे बी रिपल्शन. न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन, देयर मे बी अट्रैक्शन, देयर मे बी रिपल्शन. एंड प्रोटॉन टू न्यूट्रॉन, देयर मे बी अट्रैक्शन और रिपल्शन. There are number of repulsive forces interact. There are number of attractive forces interact over time. Got it? So we have seen that part. So this is the part. Sorry. So in nucleus, there are different types of forces interact between them. There are some attractive forces, there are some repulsive forces, but overall result is nothing but the attractive forces. Overall result is nothing but the attractive forces. That's why nucleus exists. Whenever attractive forces exceeds the repulsive forces, then nucleus exists. If attractive forces are less than the repulsive forces, when the repulsive forces exceeds the attractive forces, nucleus should not exist. This is the phenomena what we are seeing here in nuclear potential. And this here, one of the phenomena we support that is nothing but the binding energy. We have seen in last lecture, that is, you can say binding energy is equal to, is nothing but the delta M into 931 million electron volt. This is the phenomena called as binding energy. This is binding energy. Also, we have seen binding energy per nucleon. Binding energy per nucleon is nothing but this B bar. This is binding energy, and B bar is nothing but the binding energy per nucleon. This is nothing but, you can say, binding energy divided by A. That means delta M into 931 divided by A. This is what we can say binding energy per nucleon. That is also what we have seen. And also we have seen that is nothing but radioactivity. लास्ट जो लेक्चर था जिसके अंदर हमने रेडियो एक्टिविटी की बात की थी, और रेडियो एक्टिविटी के अंदर हमने ये देखा था कि रेडियो एक्टिविटी is the phenomena in which the nucleus emits, the nucleus of an atom emits some nuclear particles and some radiations, and that nucleus can transform into some another nuclide. This phenomena is nothing but the radioactivity. Last lecture we have discussed radioactivity. Radioactivity is the phenomena that is very spontaneous and very continuous. That is a natural phenomenon even, which has been discovered by Henry Becquerel named scientist. And according to this phenomena, nuclides emits some nuclear particles and some radiations from the nucleus, and that nuclide get converted into another nuclide. But let's say radium is a radioactive nuclide which gets converted into lead named nuclide. So this is the phenomenon what happens, and this is nothing but the radioactivity. This is also called as a radio decay. This process, this phenomenon is also called as a radioactive decay, also known as radioactivity. Radioactive decay is the process in which that nucleus disintegrate into some other nuclide, and that means by emission of some nuclear particles or by emission of some energetic radiations. That is nothing but the decay process, and this decay is independent of, it's a very important point, decay or radioactivity is independent of state of the matter. Matlab, radioactive element may be in solid state, maybe in liquid state, maybe in gaseous state, but it will show the radioactivity continuously. Also, radioactivity is independent of the chemical state or chemical composition. Suppose any radioactive element, it may be in a pure state or it may be in a combined state. That will show the radioactivity. But combined state doesn't affect its radioactivity. That is also one of the important things. And that also doesn't depend upon temperature and pressure phenomena. So that is what we have seen in radioactive decay. Also, we have seen rate of decay. We have seen
Rate of decay is nothing but minus dn upon dt. So rate of decay is nothing but minus dn upon dt. That is called as the rate of decay. First thing. Second, we have seen rate law. What is rate law? Rate law, this is minus dn upon dt is directly proportional to n. So इसे हमने solve करने के बाद देखा हमने कि minus dn upon dt is equal to lambda n, and this is nothing but the rate law. तीसरा, we have seen integrated rate law, और कल हमने integrated rate law का derivation derive किया था, जिसके अंदर हमने देखा था lambda is equal to 2.303 upon t log base 10 n0 upon n. This is the phenomena. Here also we have seen that is n is equal to n0 e raised to minus lambda t. This is exponential form. So ये दो derivation हमने कल के लेक्चर में डिस्कस किए थे, जहां तक मुझे याद है. Clear with this? So this is the part we have seen here in radioactivity, and this is nothing but you can say rate of decay, rate law, and this is nothing but the integrated rate law. Integrated rate law is useful where n0 is the initial amount of radioactive nuclide. N is the amount remaining after time t, remaining after time t. क्योंकि हम जानते हैं this radioactivity is a process in which nuclear particles are emitted or energetic particles are energy particles or energetic radiations are emitted, and that's why that nuclide decreases, that decompose, that transform into some other nuclide, and hence this requires some time. So after some time, how much nuclides are remaining over there, that is given by n. Lambda is nothing but the decay constant, and this is very constant for each and every element. This is very particular for each and every element. हर element का decay, ये decay constant perfect होता है, fix होता है, वो नहीं बदलेगा. So that is what we can say. So lambda, this is called as lambda. Lambda is nothing but the decay constant. This is nothing but the time, or this is nothing but the initial amount of the nuclide, and this is nothing but you can say number of atoms, nuclides remaining after time t. This is the derivation we have discussed yesterday. Clear with this? Now today we have to go ahead with the half-life period. It's very interesting. कैसे देखते हैं हम लोग क्या है half-life period? उसकी तरफ चलते हैं. Okay. Half-life period. Now see, we have the equation. हम expression discuss करते देखते अभी देखा था मैंने. Lambda is equal to 2.303 upon t log base 10 n0 upon n. ये देखते हैं. ठीक है. इस इक्वेशन को थोड़ा रीअरेंज करता हूं मैं. टाइम इस तरफ लेता हूं. टाइम इज इक्वल टू 2.303 अपॉन लैम्डा log base 10 n0 upon n. ऐसा इक्वेशन कर लेते हैं. जस्ट रीअरेंज कर दिया मैंने. नथिंग मोर देन दिस. अब देखिए, this equation is useful to calculate the time required for the decomposition, है ना. decomposition के लिए टाइम कितना लगता है. जैसे कि फॉर एग्जांपल आप देखिए कि मानो कहीं डैम है और एक डैम में से पानी फ्लो हो रहा है. डैम से पानी फ्लो हो रहा है. अभी डैम के अंदर मानो 1 लाख लीटर पानी है और हम डैम से पानी छोड़ देंगे तो हर दिन में वहां से 10,000 लीटर पानी निकल जाता है. तो हम सिंपल जानते हैं कि अगर हर दिन पानी उस डैम से बाहर जाएगा तो 10 दिन में डैम खाली हो जाएगा, क्योंकि डैम के अंदर 1 लाख लीटर वाटर है और हर डे पे वहां से 10,000 लीटर पानी बाहर जाता है. तो 10 दिन में तो सारा पानी निकल जाएगा. उसी तरीके से हमारे पास न्यूक्लाइड है, दैट इज रेडियोएक्टिव न्यूक्लाइड, दैट इमिट्स सम हाई एनर्जी रेडिएशंस एंड दैट डिक्रीजेस एंड दैट ट्रांसफॉर्म. तो जितने सारे नंबर ऑफ एटम्स हमारे पास प्रेजेंट है वो डिके होके उनका क्वांटिटी कम होता जाएगा और फाइनली इट विल डिक्रीज. ये हम अच्छी तरह जानते हैं. सो देखिए ना, n0 इज इनिशियल अमाउंट. कुछ भी हो सकता है, मतलब वो 10 हो सकता है, 20 हो सकता है, 30 हो सकता है, 100 हो सकता है, कुछ भी n0. एंड nt इज अ फाइनल अमाउंट. हम लेते हैं 0. तो अभी देखिए हम ऐसा अगर करते हैं कि 100 शुरुआत के आइटम थे, डिवाइड बाय फाइनल आइटम, हमें सारे के सारे आइटम डिसइंटीग्रेट होने हैं, वो हम लोग 0 लेते हैं. अभी आप मैथमेटिक्स अच्छी तरह जानते हो. एनी फैक्टर रेज़ टू 0, एनी फैक्टर डिवाइड बाय 0 इज नथिंग बट द इंफिनिटी. इज नथिंग बट द इंफिनिटी. इज इट ट्रू? इज इट राइट? क्योंकि हमें फाइनल आइटम 0 चाहिए ना, सारे आइटम डिसइंटीग्रेट होने चाहिए और तब जाके ये आएगा. तो फाइनल अगर हम 0 लेते लिखते यहाँ पे और ये 100 अपन 0 करते हैं, तो दैट मस्ट बी इनफिनिट. मतलब दिस इज इनफिनाइट पॉइंट वेयर वी कांट रीच. सो the time required for disintegration or decay of all of the nuclides is always infinite. It's difficult to calculate. Infinity है ना, infinity पे जा ही नहीं सकते आप. x y z axis जानते हो. We have seen that there is a y axis, there is a x axis. अभी ये जो axis कहाँ तक जाता है?
एक्सिस कहां तक जाता है आप अच्छी तरह जानते हो, दिस इज द लाइन दैट गोज टू इंफिनिटी। इंफिनिटी कहां होती है पता नहीं, वो चलती जाएगी, वो 10 किलोमीटर चलेगी, 10,000 किलोमीटर चलेगी, 1,00,000 किलोमीटर चलेगी, चलते चलेगी, बिकॉज इट्स इंफिनिटी। सो time required to disintegrate or decay all of the nuclei is difficult. It's difficult to calculate. So that's why हम पूरा t नहीं निकाल सकते, पूरा टाइम नहीं निकाल सकते कि कितना लगेगा उसके लिए, कुछ ना कुछ अमाउंट तो बचेगा, कुछ ना कुछ तो अमाउंट बचेगा, और that's why absolute time निकालना difficult बात है, and that's why a half life period concept is been introduced. half life period नाम का concept वहाँ पे introduce किया जाता है। अबे हाफ लाइफ पीरियड क्या है? नॉर्मली देखिए आपके घर में भी कभी आप सुनते होंगे, आपके डैड मॉम भी आपके साथ कभी झगड़ा करते होंगे, तो बोलते होंगे हमारा तो क्या लाइफ अभी चली गई, आपकी लाइफ देखो, है ना। कभी कभी आपका अगर मॉम डैड के साथ कभी कभी आर्गुमेंट्स होते हैं, कुछ चर्चा होता है, डिस्कशन होता है, तो बोलते बोलते वो बोल देते हैं कि हमारी तो क्या आधी लाइफ चली गई, अभी क्या थोड़ा बहुत बचा है, तो वैसे हम लोग जी लेंगे, तुम्हारा देखो। मतलब आप लोगों को गाइड करते हैं कि ये आप लोगों को आपका लाइफ बनाना है, आपको करियर करना है, आपको पढ़ाई करना है, इस हिसाब से वो बोलते हैं। नॉर्मली हम मानते हैं इंसान का लाइफ अगर 80s का मतलब 80 साल है, तो 40 साल होने के बाद तो कहते हैं हम लोग आधा लाइफ हो गया, अभी आधा बचा है ना। उसी तरीके से आपने तो अभी स्टार्ट किया बिकॉज ऑफ 16-17 हो, तो आपने अभी स्टार्ट किया हुआ है, लेकिन नॉर्मल लोग बोलते हैं। सो हाफ लाइफ का मतलब क्या होता है? हाफ लाइफ का मतलब क्या होता है? हाफ लाइफ मतलब इट इज अ टाइम रिक्वायर्ड टू डिसइंटीग्रेट हाफ ऑफ द इनिशियल क्वांटिटी, कॉल्ड एज हाफ लाइफ पीरियड। हाफ लाइफ पीरियड मतलब आधा नहीं, आधा लाइफ नहीं। यहाँ पे हाफ लाइफ पीरियड का एक खास डेफिनेशन आता है। हाफ लाइफ पीरियड इज डिनोटेड बाय टी, राइट सफिक्स में वन हाफ। देखिए टी लिख के वन हाफ, मतलब ये टी निकाला हमने और वन अपॉन टू निकाला, अब ये इस तरीके से लिखा जाता है। सो टी राइट सफिक्स वन हाफ, दिस इज कॉल्ड हाफ लाइफ पीरियड, दिस इज द नोटेशन फॉर हाफ लाइफ पीरियड। हाफ लाइफ पीरियड क्या होता है? टाइम रिक्वायर्ड टू डिसइंटीग्रेट हाफ ऑफ द इनिशियल क्वांटिटी, हाफ ऑफ द इनिशियल क्वांटिटी। अभी इसके अंदर हम अच्छी तरह जानते हैं, इसके अंदर होता क्या है? टी इज नथिंग बट द टाइम, टी इज नथिंग बट द टाइम, लैम्डा इज नथिंग बट द डीके कांस्टेंट, और वो हर सब्सटेंस का अपना होता है डीके कांस्टेंट। n0 is initial amount of radioactive nuclei, and n is the final amount remaining after time t, final amount remaining after time t, that's called the n. Okay, this is now जैसे मैंने बताया कि we need to introduce half life period, and half life period introduce करना पड़ता है because हम final तो निकाल नहीं सकते, infinity तो जा नहीं सकते, but आधा तो निकाल सकते हैं। So half life period का definition आता है, it is the time required to disintegrate half of the initial quantity, half of the initial quantity। इसका एक दूसरा मैं एग्जांपल देना चाहूंगा आपको। अब देखिए बहुत बढ़िया एग्जांपल है। मानो आपको बोला जाता है कि आपको 10 किलोमीटर चलना है, 10 किलोमीटर चलना है या 10 किलोमीटर भागना है, दोनों भी हो सकता है। अभी देखिए 10 किलोमीटर का डिस्टेंस है, स्टार्टिंग में जब रेस लगाते हैं तो सब लोग पूरी ताकत से भागेंगे। अभी उसका टेक्निक होता है, जो जानते हैं वो अलग बात है, लेकिन नॉर्मली अगर लोग भागते हैं तो बहुत भागेंगे। स्टार्टिंग 10 किलोमीटर भागना है, स्टार्टिंग में बहुत भागेंगे, भागने का रेट ज्यादा होगा। वो हो सकता है कि 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हम भागे, हो सकता है 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भागे, या 20 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, जो जो अपने हिसाब से। 1 किलोमीटर भागेंगे, 2 किलोमीटर भागेंगे, 3 किलोमीटर भागेंगे। क्या आपको लगता है 3-4 किलोमीटर के बाद हमारा रेट स्लो हो जाएगा भागने का? भाग रहे हो, चल रहे हो, तो स्लो हो जाएंगे, क्योंकि हमें 10 किलोमीटर चलना है। तो स्टार्टिंग में हमारी एनर्जी ज्यादा है तो हम लोग थोड़ा सा स्पीड में चलेंगे, बाद में धीरे 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 अपने आप स्लो हो जाएंगे। That happens. This is the way actually it happens. That is half life period. Half life period is what? Time required to disintegrate half of the initial quantity. Half of the initial quantity. अब देखिए, we have the equation thus: lambda is equal to 2.03 upon log constant n0 upon nt. Now, n0 is the initial quantity. n0 is initial quantity. Okay, initial amount. अभी ये initial amount हम लोग n0 लेते हैं, that is n0. When कब? When time t is equal to 0. Zero start कर रहे हैं हम लोग, तो टाइम 0 है, तो n0 क्वांटिटी भी कितना? n0 है। Now this is the first data. Second data, n is this final quantity. This final quantity. n is a final quantity. The amount. When time t is equal to t. अभी टाइम t होगा, मतलब हम अगर मिनट्स में बात करते तो 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, कुछ तो होंगे ना, टाइम होगा। तो ये जो क्वांटिटी है ये n होगा। नाउ इनिशियल क्वांटिटी हमने n0 लिया है, और n0 का आधा क्वांटिटी, n0 का आधा कितना होगा? n0/2 होगा। n0 का कितना होगा? n0/2 होगा, and this is nothing but the remaining quantity n. So we can say n0 is the n0 which is initial quantity, and n जो होता है that is n0/2,
That is after half-life. That is half-life. So hope you all are getting this. N0 is the initial amount what we have taken, and इसका आधा क्वांटिटी होना है. N0 का आधा मतलब N0 by 2, and उसी को हम लोग हमारा फाइनल क्वांटिटी मानेंगे जब टाइम t is equal to t होगा. But t कितना है? हाफ लाइफ. So here t must be t1 half. T must be t1 half क्योंकि टाइम आधा होना है. So this is what here. So N0 का आधा N0 by 2 और टाइम कितना है? T is equal to 1 half. This is called a half life. So now definition जैसे मैंने बताया कि definition ऐसा है कि it is a time required to react half of the initial concentration to decay half of the initial concentration. तो आप देखिए ना, हम 10 किलोमीटर भाग रहे थे, तो 10 किलोमीटर का आधा होता है 5 किलोमीटर. तो पहला 5 किलोमीटर शायद हम लोग थोड़ा स्पीडली कवर करेंगे, है ना. तो मानो कि हम लोग 10 मिनट में कवर करते हैं 5 किलोमीटर, 10 मिनट में हम लोग भागते हैं. अगला 5 किलोमीटर हम 10 मिनट में नहीं भागेंगे, शायद उसके लिए 12, 13, 15 मिनट लगेंगे, ज्यादा मिनट लगेंगे ना. सो दैट हैपेंस. सो दैट्स व्हाई हम टोटल 20 मिनट भागते हैं, तो उसमें से 10 मिनट में पहला ये नहीं भाग सकते, 5 किलोमीटर नहीं भाग सकते. हो सकता है वो 6, 7, 8 किलोमीटर में भागे, लेकिन सेकंड हाफ के लिए ज्यादा टाइम लगेगा. दैट इज सेम लाइक दैट वी हियर दिस कांसेप्ट. इनिशियल क्वांटिटी N0 है, उसका हाफ होगा N0 by 2, उसे हम लोग फाइनल क्वांटिटी कहेंगे, जबकि हाफ लाइफ पीरियड कितना T1 हाफ. अभी ये सारे वैल्यूज हम इस इक्वेशन के अंदर पुट करते हैं. सो देयर वुड बी लैम्डा इज इक्वल टू 2.303 अपॉन T. T का वैल्यू कितना है? T1 हाफ इनटू यहां पे है log base 10. N0 की क्वांटिटी कितना है? N0 as it is. और N की क्वांटिटी कितनी है? N is equal to N0 by 2. So this is N0 by 2 ऐसा रहेगा. So therefore this is 2.303 upon T1 half log base 10. अभी ये क्या होगा? N0 N0 cancel होगा. So what will happen? This will become 2 by 1. That is 2. Yeah. Now this will be 2.303 into log 2 होता है 0.3010 upon T1 half. Okay, ये इस तरफ लेंगे हम लोग और लैम्डा इस तरफ लेके आएंगे लैम्डा. तो here T1 half is equal to, ये दोनों कैलकुलेट करते हैं 0.693 अपॉन लैम्डा 10. इसका मतलब है T1 half is inversely proportional to lambda. T1 half is inversely proportional to lambda. ऐसा इक्वेशन आ जाता है. समझ रहे हैं आप लोग? So that is what we are. This is the way how we are going to calculate the half-life period. This is the way how we are going to calculate the half-life period. The half-life period is inversely proportional to lambda, that is decay constant. इसका मतलब decay constant बढ़ेगा तो half-life period कम होगा, और ये अगर कम होगा तो half-life period ज्यादा होगा. So that is what we can say. Half-life period is equal to 0.693 upon lambda decay constant. If we know the decay constant, we can calculate the half-life period. If we know the half-life period, we can calculate the decay constant for each and every element. So what is this half-life period? Half-life period is nothing but it is a time required to disintegrate half of the initial quantity. It is a time required to disintegrate half of the initial quantity. Initial quantity N0 है, उसका half मतलब N0 by 2 होगा, and that is called as a half-life period. Okay. आधे टाइम में जो डिसइंटीग्रेट होगा उसे नहीं कहेंगे. डिसइंटीग्रेट होने के लिए जो आधा टाइम लगेगा उसे हम लोग आधा टाइम कहेंगे. क्लियर विद दिस? मतलब 10 किलोमीटर भागना है तो 5 किलोमीटर भागने के लिए जो टाइम लगेगा उसे हम लोग हाफ लाइफ पीरियड कहेंगे. आधे टाइम में जो भागेंगे उसे हाफ लाइफ पीरियड नहीं कहेंगे. समझ रहे हैं आप लोग? सो दैट्स व्हाई दिस इक्वेशन इज वेरी स्पेशल और वेरी खास इक्वेशन है ये. द रीजन बिहाइंड दैट, हम पूरा टाइम निकाल ही नहीं सकते. पूरा टाइम के लिए मैंने बोला यहाँ पे ये N0 by N. N0 इनिशियल अगर हमारा कुछ क्वांटिटी है और N हमारा फाइनल क्वांटिटी है, फाइनल क्वांटिटी 0 लेना है, तो एनी क्वांटिटी अपॉन 0 इज इंफिनिटी, तो इंफिनिटी तक चलेगा. सो डिसइंटीग्रेशन प्रोसेस इनफिनाइट प्रोसेस होता है, जिसे पहुंचना मुश्किल है, काउंट करना मुश्किल है, इसलिए उसे हाफ लाइफ पीरियड में ही मेजर किया जाता है. इसलिए उसे हाफ लाइफ पीरियड में ही मेजर किया जाता है. सो द टाइम फॉर द डिसइंटीग्रेशन, टाइम फॉर द डीके इज ऑलवेज मेजर्ड इन हाफ लाइफ पीरियड. हाफ लाइफ पीरियड मतलब जो भी है उसका हाफ लाइफ पीरियड होगा. अभी हाफ लाइफ पीरियड की अगर बात करते हैं तो मैं आपको बता दूंगा कुछ. फॉर एग्जांपल कार्बन 14 नाम का एलिमेंट, कार्बन 14 नाम का रेडियोएक्टिव एलिमेंट, इसका हाफ लाइफ पीरियड है 5570 इयर्स. 5570 इयर्स. मतलब क्या है उसका? मतलब ये है, अगर हमारे पास कार्बन 14 की 10 ग्राम क्वांटिटी है, 10 ग्राम की आधी कितनी बनेगी? 5 ग्राम. तो 10 ग्राम का 5 ग्राम डिसइंटीग्रेट होने के लिए हमें 5570 साल लगते हैं. 5570 साल लगते हैं. So this is very yeah. Just
Okay. May quality loss over big disturbance here in this one. So also everyone got this. This is called a half-life period. किसी भी रेडियोएक्टिव एलिमेंट के बारे में हम लोग उसका पूरा टाइम नहीं निकाल सकते बिकॉज इट इज अ इनफिनाइट प्रोसेस एंड दैट्स व्हाई इट हैज टू बी मेजर्ड हियर इन हाफ लाइफ पीरियड. इसे हाफ लाइफ पीरियड में हम मेजर कर सकते हैं और हाफ लाइफ पीरियड इस तरीके से निकाला जाता है किसी तरह डेरिवेशन प्रोसेस. क्लियर विद दिस? So just everyone please copy with this derivations. We can go ahead for the next topic. Clear? So please copy down जो copy करना चाहते. So hope everyone got this one and that's what we can say half life period. Now we have to proceed the graphical representation for this equation that is half life period pretty well. So let's move next. That is half life. We have to discuss the unit of this one. Half life period क्या हो सकता है? Half life period का unit हो सकता है unit. See units की अगर बात करते हैं तो per second, per minute, okay, per day, per month, per year. ऐसे कई सारे units होते हैं. So हम units की अगर बात करते हैं so these units can be per second, per minute, per day. मतलब decay ना. This half life period is nothing but decay. So decay के इसमें होता है that's per second, per minute, per day, per month, per year. इस तरीके से उसकी units होते हैं. और हम अगर radioactivity unit की बात करते हैं radioactivity that is measured in curie, that is disintegration per second or decay per second also called as. तो इसमें देखते हैं. अभी चलते हैं graphical representation. Okay. So let's look at graphical representation. अभी जो दोनों ग्राफ देखे हमने उनका हमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन डिस्कस करना है. तो सबसे पहले हम लोग हाफ लाइफ पीरियड का डिस्कस करते हैं. हाफ लाइफ पीरियड का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, तो कैसे हो सकता है. नंबर 1 दैट इज हाफ लाइफ. ओके, हाफ लाइफ पीरियड की बात करते हैं हम लोग. हाफ लाइफ पीरियड के बारे में बताया T1 हाफ एंड उसका इक्वेशन देखा हमने दैट इज T1 हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन लैम्डा. ऐसे देखते हैं. अभी एक्टिविटी की बात करेंगे तो आप देखिए ग्राफिकल हियर this is activity. मतलब n0 is the initial amount of n is the activity that is amount. This is the time. Okay, but these are number of nuclides which are radioactive nuclides. This is the time. Initially, this number of nuclides will be high. Number of nuclides will be high, and with the time, these nuclide decrease. This nuclide decrease. Okay, this makes sense. This is why this number of nuclide decrease. तो मानो यहाँ पे है तो यहाँ तक है इस तरीके से जाए. So this is the initial amount that is n and this is the final amount that is n. Okay, now we time की बात करते हैं. Time की बात करते हैं. So this is the time. Time where t is equal to 0 time. यहाँ पे normally 0 यहाँ पे होता है. ये quantity यहाँ पे ले सकते हैं हम लोग नोट आउट. यहाँ पे t is equal to 0. अभी क्या होता है? Time required to disintegrate half of the initial quantity. अभी देखिए y axis की initial quantity, this is initial quantity. और this is the final. और इसका हाफ क्या होगा like this one. कितना होगा? अभी ये देखते हैं तो ये कहाँ पे इंटरसेक्ट कर लगाएगा? This is nothing but 3 1. ओके, क्योंकि देखिए ये टोटल इनिशियल क्वांटिटी था. टोटल इनिशियल क्वांटिटी का आधा मतलब यहाँ पे और आधा होने के लिए जो भी टाइम लगेगा दिस कॉल्ड एज हाफ लाइफ. फर्स्ट अभी ये इनिशियल है, ये पहला टर्न हो गया. अभी इसे इनिशियल मानते हैं. ये मतलब मान लो ये हमारा 100 ग्राम. ओके, अभी ये कितना बनेगा? 50 ग्राम. ओके, तो एग्जांपल के तौर पर 50 ग्राम. ये कोई नंबर ऑफ एटम्स की बात. सो 100 का 50 यहाँ पे होगा, 50 का 25 यहाँ पे होगा. सो दिस इज यू कैन से 25. ओके, दिस इज 25. सो दिस इज 25. इसके लिए दिस इज नथिंग बट 1 T1 अनदर. अब ये 1 हाफ नहीं होगा, ये 1 हाफ का और आधा होगा. इसका आधा होगा. दिस इज 1/4. 1 हाफ का आधा मतलब 1/2 डिवाइड बाय 2 2 मल्टीप्लाई होगा तो इट विल बिकम 1/4.
So like this one 1/4. अभी इसका आधा तो ये यहाँ पे चले like this. तो ये यहाँ पे आए. So this is nothing but 1/8 t 1/8 like उसका इसका तो उस तरीके से चले. So this is the graphical representation of half-life. This is the graphical representation of half-life. Initially, fall down will be higher. हाफ लाइफ पीरियड में जो भी हाफ लाइफ पीरियड उसमें 50% होता है, फिर उसके बाद 25% फिर 25% का मतलब 100 का 50, 50 का 25, 25 का आधा 12.5, 12.5 का 6.2 समथिंग, देन 6 का आधा 3.1 समथिंग, देन उसका आधा 1.75 समथिंग, लाइक वो चलता जाएगा पूरा नहीं होगा क्योंकि वो इनफिनाइट प्रोसेस है, 100% इनफिनाइट प्रोसेस. सो दैट्स व्हाई दिस इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन फॉर हाफ लाइफ पीरियड. Clear with this? Now let's go to the graphical representation of this radioactivity. Radioactivity, so we have the equation. हमारे पास equation क्या है? That is T is equal to 2.03 upon lambda log base 10 n0 upon n. So this is the equation of gas for the radioactivity. This is integrated rate law. Integrated rate law we are seeing here. ये यहाँ पे आ रहा है. इसको थोड़ा rearrange कर. ये पूरा quantity इसमें भेज देता हूँ. ये quantity यहाँ पे रखता हूँ. That is log n0 upon n यही पे रखा और ये quantity इस तरफ है. ये इस तरफ चला जाएगा. क्या आएगा? That is lambda t upon 2.303 आएगा. ठीक है? 303 आएगा. ये quantity. अब इसे भी solve करता हूँ मैं. ये क्या आएगा? Log n0 minus log n is equal to lambda upon 2.303 into t ऐसा. अभी इसमें से ये क्वांटिटी यही पे रखता हूँ, उस तरफ भेज देता हूँ, ये क्वांटिटी उस तरफ भेज देता हूँ. ये आएगा log n is equal to lambda upon 2.303 into t. ये यहाँ पे प्लस है, माइनस हो जाएगा, माइनस log n0. अभी देखिए यहाँ पे ऑलरेडी इसका माइनस, ये माइनस इधर शिफ्ट करता हूँ तो ये बनेगा माइनस, ये बनेगा प्लस. So we got this equation, and this equation is equal to the equation of line. This equation will be equal to as the equation of line, y is equal to mx plus c. This is nothing but the equation of line. Y is equal to, this is nothing but the y coordinate. This is nothing but the m, that is slope of line. This is x coordinate and this is the constant. इस तरीके से ग्राफ है. उसका ग्राफ क्या है? ये ग्राफ प्लॉट करना. ये y coordinate है और x coordinate ये है. So we can have this graphical representation like this. Okay. Yeah. X axis. And this is the y-axis. तो y-axis पे क्या हमारा log of n और x-axis पे क्या हमारा t, that is the time. ये और ये जो ग्राफ है आपको इस तरीके से ग्राफ, ये इस तरीके से क्यों मिलेगा ग्राफ? Because see, this is the slope of line. ये m जो होता है, m is the slope of line. This y is equal to mx plus c. Y indicates the y coordinate, x indicates the x coordinate, m represents the slope of line. तो ये आपने मैथ्स में पढ़ा होगा इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होता है, नहीं तो देख लीजिएगा. तो ये इक्वेशन ऑफ लाइन, m represents the slope line and slope is negative, and that's why line has to come like this. Line has to intersect from x axis and y axis, and this has the slope. This is the slope, and this slope is nothing but lambda upon 2.303. That has to be fine because it's negative. So we got this is the equation. So yeah, this is the graphical representation for this equation that you can say integrated rate law. And this is half-life period. So this is graphical representation for both of them. What we can have here with this. So this is the graphical representation for both. इस equation से graphical representation और यहाँ पे भी इस equation से हम लोग graphical representation concept से graphical representation. So that is what we can say representation. Right with this? So that is what we can say have here for this half-life period and its graphical representation. So what today we have discussed? We have discussed what is a half-life period. It's a definition, it's a derivation, and it's a graphical representation for half-life period as well as for integrated rate law for this radioactive decay. That is what we are saying. Okay. Now, that's all for today's lecture. I think so. Today onwards, we are going on the holidays, or already Diwali festival has been started, and the festive environment at home or everywhere in society began and it started. But there is a bit small appeal from all, from my side as well as from the nuclear family. This is the pandemic. Our pandemic is going on. That's why we are stuck at the home since last 7 to 8 months. We are stuck at the home, no doubt. But
Though life has to be enjoyed, life has to go ahead. We have to enjoy its festive seasons, that Diwali and whatever the festive season, that has to be enjoyed. But being it's pandemic going on, we are the science student of science. We're not better. Virus is there. Virus is very scientific reality, scientific truth. Virus doesn't know any festivity. A virus doesn't know any of the gatherings and whatever that. Whenever we comes in the contact with the virus, we get affected. So we get affected. So what I appeal, what we appeal from the nuclear academy, we learn that 100% everyone enjoy this festivity. It's very useful for our mentality, for celebrations to come out of any depressions and all. Have the happiness of home, have the joy at the home, everything. But this time we have to be very sensitive, as well as we have to celebrate this festive season or festival with a very careful, that it is a safe environment. So we appeal everyone enjoy Diwali full, but at the same time be sensible and be safe. So be careful while celebrating this Diwali festival and all. So that is the appeal from my side. Enjoy Diwali, make it safe, and we'll meet after Diwali. So dates will be sent to you through SMS or the mail. So till then, thank you very much. Wish you happy Diwali to you and all your family members. Thank you very much. Yes, thank you very much. See you.